पवार, नगरविकास राज्यमंत्री माननीय माधुरीताई मिसाळ, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय BVR सुब्रमण्यम, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणकुमार परदेशी, नीती आयोगाच्या माननीय देबजानी घोष, CIIचे डिरेक्टर जनरल माननीय चंद्रजीत बॅनर्जी, या प्रकल्पातले नीती आयोगाचे सहकारी डेलॉइट आणि CIIचे सदस्य आणि उपस्थित सर्व मान्यवर, मी वसुंधरा काशीकर तुमचं या कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत करते. इट्स माय डिस्टिंक्ट ऑनर अँड प्रिव्हिलेज टू वेलकम यू ऑल टू टुडेज इव्हेंट दॅट विल विटनेस द लॉन्च ऑफ नीती आयोग Witness the launch of Niti Aayog Frontier Tech Hub's roadmap, Reimagining Manufacturing India's roadmap to global leadership in advanced manufacturing. This roadmap is prepared by Niti Frontier Tech Hub. Let me now invite Ms. Debjani Ghosh, Distinguished Fellow, Niti Aayog, to deliver the opening address. Respected Chief Minister, Deputy Chief Minister, CEO Niti Aayog, all other dignitaries on stage, dignitaries in the room, and my friends from the industry. A very warm welcome, and thank you so much for turning up today to support us in the launch of this extremely important roadmap. So, a very brief introduction into what we are doing at Niti with Frontier Tech and why. Because we do believe that this is the kind of technology that stands between us in achieving our aspiration of becoming a developed nation in the next 20 odd years. This is the technology that is either going to enable us achieve that status, or it's going to, if we don't use it well, it's going to hold us back. So, this is the charter of Niti Frontier Tech Hub. We start with identifying the next big tech shifts. What are those revolutions in technology that's happening that's going to completely disrupt how we work, how we play, how we live? And then we look at understanding what does it mean from a citizen perspective, industry perspective, global leadership, transformative governance. Let me give you an example. You know, this is when you talk about frontier technologies, a lot of people ask me, what is frontier? Frontier is when science and technology comes together. This is where you see the maximum disruption and impact. And there are multiple technologies today which are coming up as frontier technologies. And when you study this deep, there are two things that stand out. The beauty, the magic of frontier tech is not in individual technologies. It's in the convergence of technologies. And the disruption that you get out of that is unprecedented. There are three things that we believe will shape the future, the next big decade of frontier tech. Cognitive revolution, how intelligence is, the evolution of intelligence into cognition. Biology revolution, the evolution of biology into programmable biology, and the evolution, the compute revolution, the evolution of omni-computing. Compute everywhere in miniaturized sensors so small that eyes can't see. And the coming together of these three mega trends is what we believe going to lead to the next era of intelligence, which is not going to be artificial, but we believe it's going to be living intelligence, where the intelligence lives on you, around you, and even inside you. And that's sort of the future that we are preparing for. And as we work on that future, we are looking at, therefore, how will that impact our lives, education, healthcare, jobs? That's what we're looking at. How will that impact industry? What does it mean for manufacturing? What does it mean for agriculture, services, the 10-year roadmap? What does it mean for government, from national security to how governments govern? And last but not the least, what does it mean for tech diplomacy? That's how diplomacy is happening today. It's all about technology control and who has maximum supply chain integration and control. So what does this all mean? So that's what we are looking at. In the 1 year that we have been in existence, we've come out with 3 detailed roadmaps till now. One on economic growth, one on social growth. So far, no one has ever thought about technologies for the informal sector. And if we don't think about in India, we are never going to be a Viksit Bharat.
because that's such a large percentage of our population in GDP. And then last but not the least, of course, jobs. All of these are available on our website. You can go and download them in public. And today we are coming out with the one on advanced manufacturing. And we have around 15 more lined up over the next 3 months, the next 3 to 4 months that will be coming out across all those sectors that we talked about. And it's not just what's going to happen in the next 10 years. We also look at what's happening today. And one of the things about technology in India today is it's very fragmented. It exists. I know we have so many of our startup founders in the room. They're doing such an amazing job of innovating for India. But the innovation exists in bits and pieces. This is one of my favorite examples from India Maharashtra. is reaching new heights in space. From Chandrayaan to Gaganyaan, our dreams keep getting bigger. But as we launch more satellites, space is filling up with junk, old bits of satellites and rockets. This space debris can hurt our satellites and put astronauts in danger. That's why IIT graduates Tushar Jadhav and Ashtesh Kumar started Manas2 Space. They created the iBooster, the first green propulsion system in India. It uses a safer fuel that's much less toxic than before. I mean, there's so many such brilliant innovations across India. The problem is no one knows about them. So Niti Aayog has set up the Niti Frontier Tech Hub. Please do visit it, Frontier Tech Repository, which is bringing together all these use cases. Our only ask is, it can't be just an idea or innovation. It has to have some level of impact. So what we are focusing here are impact studies, impact case studies with data, and bringing states together to say, how can you not reinvent the wheel, but how can you quickly adopt these solutions and solve some of your biggest problems? But there's no shortage of innovation in India. Our next big enabler as we think about these roadmaps is MSMEs. Because if we do not enable our MSMEs, then none of this is going to be a reality. And here we have partnered with CII to come out with a very transformative initiative, DX Edge. Micro, small and medium enterprises, or MSMEs, form the backbone of India's economy. They contribute over 30% to the country's GDP, account for nearly half of its manufacturing output, and drive 46% of exports. They're also the second largest employer in the country, providing livelihoods across villages, towns and cities. As India advances towards its vision of Viksit Bharat 2047, the role of MSMEs will become even more crucial. To support MSMEs in adopting future technologies, Confederation of Indian Industry, supported by Niti Frontier Tech Hub and All India Council for Technical Education, is proud to launch DX Edge, empowering excellence and growth through digital transformation. So this is an initiative where we are working with students to help MSMEs transfer, thanks to AICT and the support of MSME Ministry. Again, without these kind of enablers, the transformation of India is not going to happen. And that's sort of the overall scope that Niti Frontier Tech Hub is working on. But as technology changes, our scope continues to change because there's just so much to do in this space. And today, we are here to launch a much awaited roadmap on how do we move from manufacturing to advanced manufacturing in next 10 years, and how do we become a leading hub. And I'm so happy that we are doing this in Pune. And Chief Minister Fadnavis, I'm so happy that you took the time to attend, because if there is one state in India that can lead this charge, it is Maharashtra. So thank you so much for taking the time to be here. So with that, lastly, I just want to thank, Niti Frontier Tech Hub works on crowdsourcing expertise. We get the best minds from industry, from academia, from government come together and work with us to create these roadmaps. Future casting is a very difficult thing to do because there's no data. You have to really, stretch your imagination and figure out how to do this. So very thankful to the 100+ experts who are working with us to make all of this happen. And I hope you will find today's roadmap, especially the manufacturing industry here, I hope you will find today's roadmap really useful. So thank you again, and look forward to the discussions.
Thank you, Ms. Ghosh, for those opening remarks. फ्रंटियर टेक हब की दो उपलब्धियां मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक सुविधाएं पहुँचनी चाहिए। तो जो केस स्टडीज़ उन्होंने रियल लाइफ कलेक्ट किए हैं, उसमें से राजस्थान के टोंक ज़िले में 300 सरकारी स्कूलों में लर्निंग विथ एआई का प्रयोग किया गया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगी कि 12,000 विद्यार्थी थे जिन्हें इसका लाभ हुआ। जो गणित सबको बहुत कठिन जाता है, पर उनके पासिंग मार्क्स में बहुत सुधार दिखाई गया। और दूसरा केस स्टडी है जो यहाँ बताना ज़रूरी समझती हूँ कि गुरुग्राम टेक ईगल स्टार्टअप ने हाइब्रिड वोटल ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ और वैक्सीन दुर्गम इलाकों तक पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर ईश्वरन सुब्रमण्यम को फ्रॉम डेलॉयट टू ब्रीफली शेयर विथ अस द की फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस फ्रॉम द रोड मैप। Honorable CM, Honorable Deputy CM, Madam Minister, dignitaries on the dais, leaders from the industry. I will, over the next 10 minutes, quickly take you through the key recommendations as well as the evolution of our journey leading to the recommendations and seek your perspectives on that. Just by way of quick context, as Debjani mentioned, we had great support from leaders of the industry in helping us shape some of our thoughts, and I'm thankful to each one of them for their contributions over the last few weeks. India's manufacturing GDP, is at about 15 to 17% of our total GDP. If we were to realize our vision for Viksit Bharat at 2047, we need to achieve a manufacturing contribution to GDP of 25%. At the current level of growth that we will have, we will obviously be growing at a CAGR of about 6%. The need for us is to grow at a CAGR of literally at about 12%, which means that we need to bridge a gap, which is a significant gap of about 5.1 trillion or 5,100 billion. And that is where we need to really start focusing on how advanced manufacturing will help us leapfrog the curve of competitiveness from being a 6% contribution to a 12% contribution. So that's the burning platform on which we really started looking at what should be the contributions that advanced manufacturing can make and should make for our nation. There are many things that we need to do among the dimensions that we have to address to jump from the 6% or the 7% growth to about a 12% growth. We focused on many dimensions. I'm presenting the three of them which are the most prioritized for us to take that journey. The first one is for us to really have long-term competitiveness. Therefore, the big dimension is total factor productivity. We really need to go from about a 2.2% total factor productivity CAGR right now as we speak to about 5.5%. So that is really a 2.5x growth that we need to achieve. The second one is, therefore, how do we really participate in global trade, long-term supply chain resilience, not just for outputs alone, but for inputs too. Therefore, contribution to global trade, again from the current 2%, roughly about 1.8% as we speak today, to how do we go to our 10%, which is our aspiration from a Viksit at 2047. And the third one, which is most relevant for us, which will be a culmination of the first two, is that we would be able to create champion brands out of India. And we need to create those champion brands just like what many of the other nations have done. So move to at least about 60 champion brands in the next 10 years and go to 100 champion brands in the next 24 years, so which is by 2047. During this journey, we also tried to characterize the paths that the other countries have taken and what learnings can we adopt, because each of them have made significant contributions to manufacturing GDP. We looked at Germany, we looked at Korea, we looked at China. And one of the things that you would notice that each one of them have taken a significant direction towards advanced manufacturing technologies. Germany's focus was
on Industry 4.0. And the reason why Germany's focus is also relevant, as you would all know, that the journey encompasses both the large enterprises as well as their MSMEs. The second one is from Korea, and Korea's biggest advantage has been advanced material science. And advanced material science really creating head start competitiveness to that country in many of the emerging sectors. And China now really focusing on the next level, which is really coming up with dark factories which would be fully automated, making them completely energy optimized. And some of the big constraints that we have, both from way of infrastructure as well as by way of deployment being addressed. So we took these dimensions to look at what can be the learnings that we can adopt. Obviously, there were some challenges too, which we considered as we created the roadmap. And with that, to make a very focused effort, we identified and shortlisted 13 high-impact sectors. These 13 high-impact sectors contribute to currently 70% of India's manufacturing GDP. I would say about 73. So therefore, it is not many that we have been excluding. Second, as we started looking at 2035 and move forward into 2047, these were contributing in our projections anywhere between 80 to 85% of the manufacturing GDP. Therefore, it not only helps us make a focused effort, it also ensures that we are addressing the right set of sectors for us to deal with going forward. And from an ease of implementation perspective, taking synergies of value chains into account, we group these 13 high impact sectors into 5 clusters of or groups of industries. All of them which you can see on stage: engineering, consumer products, life sciences, electronics, as well as chemicals. So all these 5 clusters and the 13 sectors into the future would be upwards of 80% on manufacturing on the manufacturing GDP, and today it's about 70 to 75%. Therefore, for these 13 sectors and the 5 clusters for us to really have the advanced manufacturing solutions impacting them into the future, we did not focus only on what the sectors are doing today, but we looked at what would be the evolution of these sectors going forward. And we were able to incidentally characterize the evolution into 6 themes which are very common across each one of them and helped us build those recommendations. And when we looked at those evolution of these sectors and the characteristics of those evolution, we identified 4 prioritized technologies from an advanced manufacturing portfolio which would have the highest impact for our nation, covering, like what I said, both our large enterprises as well as MSMEs. First one is obviously advanced material science, which really gives us a head start in terms of how our nation can progress on many of the sectors that we are discussing. Second is on digital twins, creating the replica of the physical environments and therefore help us optimize both costs as well as create the most optimized infrastructure that we would want. Third one is really about robotics. And finally, AI ML algorithms, which is beyond traditional AI ML. So these are the 4 technologies that we have shortlisted for us to have a large-scale deployment as well as adoption going forward across the 13 sectors to start with. And when we, therefore, with these in context, I'll come to the recommendations. We took the recommendations from both a short-term perspective as well as from a medium-term perspective. We have taken them in 3 phases. The first phase between leading up to 2028, the second phase leading up to 2031, and the third phase going forward. And the way in which we have looked at the recommendations, I'll take you through, and there are 9 major recommendations. I'll possibly take you through 3 or 4 of them, given the paucity of time. The first and the most important one is that advanced manufacturing pillar should be a strategic priority under the National Manufacturing Mission. Therefore, as you would all know, the government has announced a very, very important initiative around the National Manufacturing Mission. And therefore, the advanced manufacturing pillar being a strategic priority will ensure that we have a very seamless implementation, at the same time a very standardized model which can be absorbed across states, across sectors, and across clusters. So that's the first and most important recommendation. The second one is that we have also recommended we create a first of its kind
Global Frontier Technology Institute. So advanced manufacturing technologies evolve, and therefore one of the recommendations is that we create a Global Frontier Technology Institute, which will be the first of its kind in the world, and which will be the benchmark for us to not only look at adoption of advanced manufacturing technologies at scale, but also will ensure that the evolving advanced manufacturing ecosystem for us would also be tested, which will also be recommended, and therefore it would be the hub for all advanced manufacturing technology evolution for our nation. The third dimension that we have focused on is an area where today the manufacturing ecosystem is moving into servicification of manufacturing. I think today no more are clients thinking about, any of us here would know, no client is thinking about buying only products. They're really looking at solutions from us, which is a combination of products and services. All of you would have heard the term subscriptions, right? So therefore, including everything from tires is now on subscription. Therefore, one of the things that we have recommended is how does our nation prepare ourselves for servicification of manufacturing? So one of the recommendations that we also have is moving away from a product-based manufacturing ecosystem in India to an innovation-based, solution-oriented ecosystem in the marketplace. So that's the third one, which also links back to the global trade that I spoke about. The fourth one that I also wanted to talk about, which is an important one, is the creation of advanced manufacturing industrial hubs. Today, we are actually having industrial hubs, which are physical ecosystems for plug and play. But the recommendation that we have is that to accelerate the adoption and the deployment of advanced manufacturing solutions for long-term competitiveness, we'll focus on creating, to start with, about 20 in the chosen sectors, about 20 by 5 sectors we have taken, to start with 20 industrial manufacturing hubs, which are plug and play advanced manufacturing industrial hubs in chosen clusters. So that would be the fourth one. And the last one, most important one, is also that we will have a champion organization-led model. We have a huge portfolio of MSMEs across all sectors that we have identified across the 13 sectors. And it will be very difficult for those MSMEs to really adopt this on an ongoing basis. Therefore, they will be champion organization-led, which means role model organizations will be identified, and role model organizations will have a part to play in ensuring that we have the accelerated deployment of advanced 4.0 solutions, advanced manufacturing solutions going forward. Therefore, there are about 9 recommendations. These are 4 or 5 of them which will have a significant movement towards the trajectory that we have from the 7% growth to the 12% growth that we have from a manufacturing perspective. And finally, I think, Devjani, you touched upon it. I think no better than our state to actually be the spearhead for India's advanced manufacturing transformation, right? Many firsts, I don't need to talk about each one of them. We are the largest state by GSDP. We have the largest recipient of FDI. We have one of the fantastic MSME ecosystems, so really aligns with our journey for having a very inclusive advanced manufacturing deployment model. And obviously, we are the second highest in exports, and obviously the number 1 state in manufacturing GDP. So no better than us to be the spearhead and the leader on this transformation journey to adopt advanced manufacturing to take India to the Viksit vision of 2047. So thank you very much, and happy to discuss with you later. Thank you so much, sir. May I now request our distinguished guest on the stage to launch the roadmap? Let me also request Ms. Rucha Nanavati, Mr. Dilip Sawhney, Mr. Ishwaran Subramaniam, Mr. Neeraj Huddar to join us on the stage for this launch. Thank you, everyone. I request and encourage our audience to go through the report in detail and wherever possible, act on the recommendations with urgency. अब मैं CII के महानिदेशक श्री चंद्रजीत बैनर्जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उद्योग जगत का दृष्टिकोण साझा करें. Thank you. Good morning,
Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, Minister, CEO Niti Aayog, Debjani, other distinguished leaders. First of all, I must say it's been a proud privilege always to be deeply engaged and working with the leadership which is on this dais, be it the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, of course, the CEO of Niti Aayog especially. A lot of engagements historically between industry and our institution and all three of them. Having said that, congratulations Debjani for the phenomenal presentation and the launch. I just had a couple of points to mention, and that's about manufacturing. We have always been talking for years to take it from the teens to the mid-20s, and it's got stuck in the teens. We'll need to move it, and this we see to be the enabler to take it forward. The digital manufacturing ecosystem, as you were talking about, the AI, the IoT, the data analytics, all of them being embedded. And one of the points that came out was, how do we take the supply chain? How do we involve the supply chain? And I think institutions like ours would be very, very keen to see that it goes into the supply chains. This third point, which I really wanted to emphasize, was something which is lacking in India, Indian industry, private sector especially, is R&D and the lack of R&D. This will be a huge enabler that we see will help encourage Indian companies getting into R&D, into a future tech in terms of R&D, and 20 to 30% of easy productivity of Indian companies going up, which will be phenomenally important. The fourth, if I can take up, is another point which was touched upon, is what it would do to our youth, what it would do to our skills landscape, what it will do to our employment landscape. And this could be a phenomenal project. I would like to take the advantage of the Honorable Chief Minister's present to say that, this is an opportunity for India to get back talents across the world to come and work. 1,000 odd talents on areas like AI. Leaderships like yours can give them the space for them to come back and work in India. So can we look at it from the lens that was presented by Debjani? The fourth, which wanted to really talk about was mentioned about MSMEs. And the DXX really gives us that platform. So another thing which has been missing has been the partnership between the academia and industry, and bringing in along with them the SME when it comes to research, when it comes to newer tech work. And I think this will be a phenomenal enabler for us to take forward. One sees Niti to be a big player in all of this, the National Manufacturing Mission, and now this entire piece on AI. And I think the partnership that industry can play with the Niti in terms of taking forward taking this forward through the various formats that now Niti has in terms of capacity in these areas would be phenomenal. And lastly, sir, the next story of India is in the states of India. The states of India is where we will see things happen. Pune is one of the most important manufacturing hubs of the country, and it's great to see that we are getting the states more and more empowered, and we will see more and more happening in some of the states which is leadership like yours. And this collaboration between center, between state, and of course industry and academia would be of great value. So thank you very much, and congratulations for this phenomenal launch. Thank you. Thank you, Mr. Banerjee. Let me now request Ms. Rucha Nanavati, CIO Mahindra Group, to share perspective on behalf of the expert council members who have guided this effort. Namaste to everybody, Honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister, Madam Minister, all the dignitaries on the dais. I'm truly honored to be here today as part of this roadmap launch. I think what makes this effort different is the discipline and the intent, and I've seen that as I've worked with the expert council. This is beyond the pilots and isolated experiments. It's in the mission mode now. It's mission mode approach, task forces with measurable outcomes, stronger R&D collaboration, and real focus on execution. Such initiatives with National Manufacturing Mission, India AI Mission, these are ensuring that technology sits at the heart of India's growth story and attached with manufacturing.
This reflects a coordinated national approach, bringing together government, industry, academia, and startups to move with a shared purpose and speed. Beyond leading technology, each sector has to be approached in a tailored way, a tailored strategy. As Niti Aayog rightly notes, technology alone cannot break systemic barriers. The promise of tech will only be fully realized when focused skilling, innovation, and enabling ecosystems come together, which is what we saw as Debjani opened in her notes. The same holds for manufacturing. I want to take automotive sector as an example here. As a nation, we are investing in advanced EV batteries, connected software platforms, autonomous vehicles, smart factories. This, aligned with the right policies, infrastructure, and skills training, will unlock the next wave of productivity and innovation across India's manufacturing landscape. In fact, analysts are predicting that India's push into smart mobility could take us up to be the global hub. By 2047, electrification, EVs, and connected cars could put India on the world map for next generation mobility, and that's where we can contribute to the 25% that we need to in the GDP. Over the last decade, the global manufacturing landscape has witnessed defining shifts in competitiveness. The nations that embraced innovation and technology clearly have surged ahead. And this is what we are trying to do here. The cost of inaction is far, far greater than the risk of transformation. I think this is an important point that we all have heard here as well. Acting with speed and purpose today will define India's manufacturing strength for decades to come. The plan we are making for 2035 and for Viksit Bharat on 2047. Lastly, I want to talk about skills that we all talked about, right? We have nearly 200 million young Indians entering the workforce by 2030. Without rapid innovation, we'll risk missing not only growth targets, but the opportunity to create the kind of high quality, future ready jobs that our youth deserves. At the World Economic Forum has reminded us that countries that lead the fourth industrial revolution will define global competitiveness for the decades to come. India is definitely well positioned to lead. The conversations we are having here today reflect India's growing confidence in shaping the global technology agenda, from AI and advanced materials that we talked about to models of sustainable manufacturing. The government semiconductor push that is there reflects our intent to master the supply chain and not just be the consumer of it. International data centers, centers of excellence, the global capability hubs that are coming up, they're flocking here. I think these initiatives are funding the layers and foundations of indigenous capability that we have here. Our future is bright, our ambition is bold. What I want to say is that we are leading. We are entering a decade where India is going to lead in creating technology, lead in building globally admired brands that we just talked about, lead in shaping a model of progress that is smart, that is sustainable, that is distinctly Indian. The opportunities is historic, the time to act and the time to seize is now. Thank you so much. Very glad to be part of this. बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नीति आयोग के माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री BVR सुब्रमण्यम जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचार साझा करें। परमादरणीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, परमादरणीय उप मुख्यमंत्री पवार साहब, मंच पे पधारे सभी महानुभाव और सभी सज्जन यहाँ बैठे जो हैं। सर, मैं जो लोगों ने कहा उसको दोबारा दोहराऊंगा नहीं, बट केवल 3 चीज़ों पे बात करूंगा। पहली चीज़, मैन्युफैक्चरिंग का क्या महत्व है, नंबर 1। उसके बाद महाराष्ट्र और पुणे का क्या महत्व है और हम आगे क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात। पहली चीज़, प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा अहम लक्ष्य रखा है कि देश को विकसित भारत बनाना है। और देश को विकसित भारत बनाना कठिन काम नहीं है, लेकिन एकाग्रता के साथ 20-25 साल तक उसी पे लगा रहना है। रास्ते से भटक गए तो नहीं हो सकते। अगर हमने कहा कि हर साल 8% ग्रो करना है तो 20 साल 8% लाना ही होगा। 1 वर्ष नीचे हुआ तो अगले साल उसको कैचअप करना होगा। और इस परिवर्तन और इस ग्रोथ के लिए जैसा आपने देखा, मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ही अहम भूमिका है। विकसित भारत का एक आधारभूत स्तंभ मैन्युफैक्चरिंग ही है। अगर हमारा जो कृषि प्रधान देश है,
जहाँ पर 50% लोग आज भी खेती पर निर्भर करते हैं, उनको अगर और आमदनी बढ़नी है तो वहाँ तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी ही होगी खेती में, लेकिन उनको मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में लाना होगा जहाँ पर नौकरियाँ मिल सकती हैं, जहाँ पर आमदनी ज़्यादा होता है। और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना ज़रूरी है। और देश के जो भी आप अव्वल देश देखेंगे, आपने देखा चाइना, जर्मनी, कोरिया, सब ने मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दे के 25-30% जीडीपी का हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग में लगा के वो आगे निकले। तो हमारे लिए भी ज़रूरी है और ये भारत सरकार भी एहसास करती है। इसीलिए भारत सरकार ने एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन घोषित किया पिछले बजट में। अच्छी बात यह है कि ये अंतिम दौरे पे है हम लोग। एक माने बहुत ही शीघ्र, मैं समय सीमा तो नहीं बताऊंगा, बहुत ही शीघ्र ये प्रस्ताव अनुमोदित होकर फिर लॉन्च भी हो जाएगा। इसमें देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जो परिवर्तन लाने की कल्पना है, जैसे चाइना ने या दूसरे देशों ने 10-15 साल में परिवर्तन लाया, उसी प्रकार का परिवर्तन लाने का कल्पना है। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद और हाथ है। तो मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के देश विकसित नहीं हो सकता। और ये कोई प्राइवेट अपने आप कर लेगा या सरकार अपने आप कर लेगी, ऐसा नहीं होगा। सभी को हाथ मिला के जोड़ के काम करने से ही होता है। यही हमारी एक कल्पना है सर। दूसरी सर, क्यों पूना और क्यों महाराष्ट्र? आप देखेंगे ये रिपोर्ट केवल एक राज्य पे केंद्रित नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। जो भी आपने देखा ये पूरे भारत के लिए है। अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त है दुनिया में। टेक्टोनिक शिफ्ट, यही आपने सोचा, मूलभूत परिवर्तन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में। ऑटोमेशन हो रहा है, इंडस्ट्री 4.0, और दूसरे जियो पॉलिटिक्स की वजह से जो सामान एक जगह से मिलता था वहाँ से हम ले नहीं सकते। मैग्नेट्स के कारण आपने देखा लोग इधर उधर भटक रहे थे, गाड़ी वाले। सो ये सब होने के कारण नए अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे देश के लिए आ रहे हैं। दुनिया में भारत का एक बहुत बड़ा ताकत है, हम सबके मित्र हैं। तो इसलिए हम सभी के साथ व्यापार कर सकते हैं, जिससे कि हम एक अच्छे बेस बन सकते हैं। और ये भारत के लिए। महाराष्ट्र की दृष्टि से आपने आखिरी स्लाइड में आंकड़े हम किसी को दोबारा बोल देंगे नहीं, जीएसडीपी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एफडीआई हो, एम्प्लॉयमेंट हो, यू आर द नंबर 1 स्टेट। बट नंबर 1 स्टेट को नंबर 1 रहने में भी मेहनत करना पड़ता है। और दूसरा, आप लीड करोगे तो फिर बाकी राज्य पीछे पीछे फॉलो करेंगे। जो भी आप समुद्र में नाव चलती है ना, पहले वाला नाव को ही सबसे ज़्यादा काम होता है कठिन, क्योंकि उसी को तो रास्ता बनाना, पीछे वाला उसी के, इन इंग्लिश वी से फॉलो इन द वेक, उनका रास्ता आसान हो जाता है। मैराथन रनर में जो पहला लीड करता है उसी को मेहनत हवा ब्लो लेना पड़ता है। ओनली महाराष्ट्र कैन डू इट। आपके यहाँ टैलेंट है, आपके यहाँ टेक्नोलॉजी है, आपके यहाँ इकोसिस्टम है, एंड यू हैव अ गवर्नमेंट विच इज़ कीन ऑन डूइंग। सो आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द स्टेट्स, आई एम नॉट गोइंग टू से, सीएम साहब शायद बोलेंगे, एक अपना विजन बना रहा है ये 2047 तक विकसित महाराष्ट्र कैसे बने। आई एम श्योर उसमें इंडस्ट्री का भी एक मेजर रोल होगा। इसी को देखते हुए विदाउट हैविंग महाराष्ट्र टेकिंग द लीड, हम मैन्युफैक्चरिंग में जो हम परिवर्तन चाह रहे हैं वो हो नहीं सकता है। दूसरा, अगर महाराष्ट्र लीड लेता है, आप देखेंगे 10 और राज्य इसमें कूद पड़ेंगे और आगे चलेगा। ये हमारी धारणा है। इसीलिए, और महाराष्ट्र के अंदर खास करके जो पूना का जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, ये ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। जब भी हम देश में, कई बार हम लोग यहाँ वहाँ माननीय प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशंस करते हैं, देश में क्लस्टर्स की बात करते हैं, किसी भी सेक्टर में हो, पुणे बीच में दिखता ही है। आप ऑटोमोबाइल देखो तो पूना आता है, आप आईटी देखो पूना आता है। बहुत चीज़ों में पूना इज़ अ नेचुरल क्लस्टर। और कई बार क्या होता है कि शायद ये पुणे वालों की खासियत है, ज़्यादा बोलते नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलता है कि यहाँ इतना काम है। ये बाकी बड़े बड़े शहर बेंगलोर, हैदराबाद के टक्कर का शहर है। तो इसीलिए हमने सोचा पुणे में आए और आपको हम कृतज्ञता देते हैं कि आप आके रिपोर्ट रिलीज़ किए आपने। तो ये हम और आप भी बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। आपने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए प्लान्स बना रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स पूरे राज्य में आपने अलग रखा है, तो ये होगा। तो ये रिपोर्ट के आधार पर हम लोग बहुत काम करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग मिशन शीघ्र ही लॉन्च होगा, उसमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा हिस्सा होगा। आपसे 2-3 गुजारिश, और राज्य के लिए अच्छा, राष्ट्र के लिए भी अच्छा। एक, राष्ट्र स्तर पर जब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन घोषित होगा, उस समय कल्पना होगी कि राज्य भी एक अपना स्टेट मैन्युफैक्चरिंग मिशन शुरू करें। आपके सेक्रेटरी वगैरह बैठे हुए हैं, एक स्टेट मैन्युफैक्चरिंग मिशन तुरंत उसके बनने के 1 महीने के अंदर आप भी शुरू कर लें, तो यू विल बी फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक, नंबर 1। और वहाँ से जो भी होना है उसका लाभ उठाने में आप अव्वल रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2 सर, आज आपने देखा एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को कहीं एंकर करने के लिए ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जरूरी है।
I think Pune would be a fantastic base for a GFTI. वो हम कागज़ पे लिख नहीं सकते, बट आप मेहनत करेंगे, भारत सरकार आपके साथ देगी, तो निश्चित रूप से पुणे कैन बिकम अ ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का बेस. इट विल बी अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज. अभी यहाँ पर 1000 इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो 10,000 भी हो सकते हैं, और दुनिया भर के लोग. तीसरा सर, इंडस्ट्रियल हाउसिंग का एक बहुत बड़ा स्कीम है भारत सरकार में. आजकल हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क्स बना देते हैं, लेकिन वो मजदूर कहाँ रहते हैं कभी सोचते नहीं, वो स्लम्स में रह जाते हैं. आई थिंक महाराष्ट्र शुड बी, तमिलनाडु अच्छा कर रहा है, मैंने साफ बता देता हूँ. तो इसीलिए वहाँ वो एप्पल वगैरह जाके 40-50 हज़ार लोगों की एक एक जगह फैक्ट्री बन जाती है. दिस इज डॉर्मेट्री हाउसिंग. पहले मजदूर अकेला आता है, परिवार 5-6 साल बाद आते हैं. तो ये डॉर्मेट्री टाइप हाउसिंग का आप उसका स्कीम का फ़ायदा अब भी बन रहा है. आप लोग आगे रहें तो आप उसमें हो जाएंगे. और लास्टली जो हमने कहा, फ्रंटियर टेक इंडस्ट्रियल पार्क्स, उसमें अगेन महाराष्ट्र शुड है 1 or 2 फ्रंटियर टेक इंडस्ट्रियल पार्क, बिकॉज ये सारा एक इकोसिस्टम एक ही जगह होता है, 5-10 जगह बिखरे हुए नहीं होता है. एक ही जगह ये सारे लोग बैठेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे. वो जैसे स्पेस है, वो बेंगलोर में बन गया क्योंकि वो सभी पर वहाँ पर चल रहा है, कुछ चेन्नई में बन गया है, ठीक है. सो 1, 2, 3 फ्रंटियर टेक इंडस्ट्रियल पार्क्स अगर आप शुरू करेंगे, यू विल एक्चुअली बिकम वेरी वेरी अट्रैक्टिव. यकीन नहीं करेंगे, हर रोज़ दिल्ली में कम से कम 10-12 विदेशी कंपनियां रोज़ उतरती हैं, कैसे खोलें, कहाँ खोलें करके. इंटरेस्ट इज़ देयर, बस हमें उसको कैप्चर करने की ज़रूरत है. आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थँक यू व्हेरी मच. माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की त्यांनी सभेला संबोधित करावं, सभागृहाला मार्गदर्शन करावं. सभी को नमस्कार. हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अजित दादा पवार जी, राज्य मंत्री माधुरीताई मिसाळ, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री BV सुब्रमण्यम जी, हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री प्रवीण परदेशी, मंच पर उपस्थित श्रीमती देवजानी घोष, श्री चंद्रजीत बनर्जी, श्रीकर परदेशी, यहाँ पर उपस्थित सभी इंडस्ट्री कैप्टन्स, सभी विचारक और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले नीति आयोग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जो एक बहुत ही सुंदर रिपोर्ट रीइमेजिनिंग मैन्युफैक्चरिंग तैयार किया है, जिसमें भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का रोड मैप तैयार किया है, विच इज़ पावर्ड बाय फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज. इसका विमोचन करने के लिए आपने महाराष्ट्र और पुणे को चुना, और इस अच्छे काम के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. और जैसा कि मेरा काम आपने ही बिल्कुल हल्का कर दिया, ये बताकर कि इसके लिए पुणे से अच्छी जगह दूसरी हो ही नहीं सकती. निश्चित रूप से जिस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग की इकोसिस्टम पुणे ने पिछले कई दशकों में खड़ी की है, वो अपने आप में मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश में एक मिसाल है. और लगातार सारी न्यू टेक्नोलॉजीज, सारा मैन्युफैक्चरिंग का एडवांसमेंट, ये हमको पुणे में देखने को मिलता है. विशेष रूप से इस रिपोर्ट में हमारा फोकस ये मैन्युफैक्चरिंग में लीप फ्रॉग करने का है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हम अब ऐसे स्तर पर आए हैं कि जहाँ से अगर हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो हमको बिजनेस यूजुअल से वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगी. हमें नए विचारों से आगे जाना पड़ेगा, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज
जो मैन्युफैक्चरिंग को रीडिफाइन कर रही है। हम सभी लोग जानते हैं कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर, ये 3 पिलर्स ने आज चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, हर क्षेत्र को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। और इन सारे क्षेत्रों में एक बड़ा डिसरप्शन भी इस ये जो 3 पिलर से इसके माध्यम से आ रहा है, और उसी को कैप्चर करने का विचार इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। जैसे देवजानी जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्या है, तो टेक्नोलॉजी और साइंस का मैरिज है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो मैरिज है, इसको जब हम मैन्युफैक्चरिंग में लाते हैं तो जिस प्रकार की एफिशिएंसीज बढ़ रही है, ऑटोमेशन के कारण, कनेक्टिविटी के कारण और ये सारी टेक्नोलॉजीज के कारण, उससे हम लोग ग्लोबल कॉम्पिटिटिव भी हो रहे हैं। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि नॉट जस्ट बिकमिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बट टू लीड द न्यू रिवोल्यूशन, इस प्रकार से हमें हमारा प्रवास, हमारी जर्नी करनी है। और उस दृष्टि से मैं ऐसा मानता हूँ कि मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो अपेक्षा माननीय सुब्रमण्यम साहब ने यहाँ पर व्यक्त की है, मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र को ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि जैसे हम इंडिया को लीडर बनाना चाहते हैं, विद इन इंडिया महाराष्ट्र कैन बी लीडर। और ये जो अब नेशनल मिशन आपने शुरू किया है, अलाइनिंग विद द नेशनल मिशन, हम लोग बहुत ही जल्दी हमारा स्टेट मिशन भी यहाँ पर शुरू करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि कल ही हमारे मंत्रिमंडल ने, हमारी कैबिनेट ने विकसित महाराष्ट्र 2047, ये जो नीति आयोग के साथ हमने एक विजन तैयार करने का काम किया, उस विजन को मान्यता दी है। और एक प्रकार से ये रोड मैप है टुवर्ड्स विकसित भारत, टुवर्ड्स विकसित महाराष्ट्र। और इस रोड मैप को तैयार करते हुए भी वन ऑफ द मिशन, विजन एंड मिशन इज ऑफ कोर्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और इसमें भी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का विचार हम लोगों ने किया है। इसमें हम लोग किस प्रकार से इस रिवॉल्यूशन को लीड कर सकते हैं, इसका विचार हमने किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अब उसको इस मिशन के साथ हम अलाइन करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सीईओ साहब ने दूसरा जो एक मंतव्य यहाँ रखा है, वो भी मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जब मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर एक रिन्यूड इंटरेस्ट, ग्लोबल इंटरेस्ट इंडिया में हमको दिखाई पड़ता है, भारत में दिखाई पड़ता है, तो ऐसे समय हम लोगों के लिए ये भी बहुत आवश्यक है कि हम सब प्रकार की प्लग एंड प्ले की सुविधाएं ये उपलब्ध कराएं। क्योंकि हमने ये देखा कि जिस समय हम लोगों ने डीएमआईसी की पहली स्मार्ट सिटी ये छत्रपति संभाजी नगर में तैयार की, और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम हमने तैयार किया, तो अब हमारा जो छत्रपति संभाजी नगर है, ये पूना की ग्लोरी थोड़ी कम करते हुए नया ईवी कैपिटल के रूप में इस्टेब्लिश हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग सही कनेक्टिविटी दे, सही इंफ्रास्ट्रक्चर दे, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत आग्रह होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये हम उपलब्ध कराएं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से स्मार्ट माइंड्स, क्रिएटिव माइंड्स, ये सारे हमारे यहाँ आ सकते हैं, आ रहे हैं। उनको हम लोग निश्चित रूप से
उनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि हमने एक टास्क फोर्स तैयार किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग 100 रिफॉर्म्स करेंगे, और ये 100 रिफॉर्म्स इस प्रकार से हम लोग करेंगे कि जिससे हम लोग पहले एक एक क्षेत्र में नेशनल बेंचमार्क को अचीव करेंगे, वो हमारा पहला चरण होगा। और दूसरे चरण में जो भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस इन एवरी सेक्टर है उसको हम अचीव करेंगे। इस प्रकार से ये मिशन हमने हाथ में लिया है, और इसकी एक वॉर रूम भी हमने तैयार की है कि जिसमें एवरी मंथ एज ए चीफ मिनिस्टर मैं स्वयं, हमने उस महीने में इस रिफॉर्म प्रोसेस में क्या तरक्की की है, हमने उसमें क्या अचीव किया है, इसके ऊपर हम डेलिब्रेट करेंगे। उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको हम दूर करेंगे, ताकि ये जो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं वो यथार्थ में हम लोग प्रैक्टिस में ला पाए। इस दृष्टि से भी ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से आज ये जो सारा हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग को रीइमेजिन करने का विचार किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट की बात हम लोगों ने की है, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से ऐसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट को महाराष्ट्र होस्ट करेगा। हम लोगों ने ये प्रयास किया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब महाराष्ट्र ये देश का डेटा सेंटर कैपिटल भी हुआ है। सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर की कैपेसिटी ये महाराष्ट्र में तैयार हुई है। हम लोग पुणे और मुंबई के बीच क्वांटम कॉरिडोर तैयार करना चाहते हैं, इसके लिए भी हम लोगों ने पहल की है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि यही इकोसिस्टम है जो निश्चित रूप से इस ग्लोबल इंस्टीट्यूट को होस्ट कर सकती है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस बात को सोचा। और चूँकि पुणे एक हमारा एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग का, टेक्नोलॉजी का हब है ही, और अभी न्यू मुंबई जो है ये हमारा डेटा सेंटर कैपिटल बना हुआ है। और हम लोग अब बिटवीन पुणे एंड मुंबई और न्यू मुंबई ये सारे इलाके में वी आर गोइंग टू क्रिएट अ इनोवेशन सिटी। एक बहुत बड़ी इनोवेशन सिटी हम लोग तैयार कर रहे हैं। हमारे जो टाटा सन्स के एन चंद्रशेखरन है वो अभी उसके सारे कंटूर्स ड्राफ्ट कर रहे हैं, और उसके बाद कई लोगों के साथ अभी हम लोगों की बातचीत भी उसमें हुई है। और कई ग्लोबल प्लेयर्स दे वांट टू पार्टनर विद अस, तो उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बिल्कुल सही वक्त पर हम लोग इस प्रकार से ये जो इनोवेशन सिटी तैयार करेंगे, ये इनोवेशन सिटी भी ये जो हमारी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है इसको होस्ट कर पाएगी। और एक्चुअली हम लोगों ने इसका प्लान ही ऐसा किया है कि हम लोग जो एजू सिटी तैयार कर रहे हैं, वेयर 12 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ आर गोइंग टू कम, 7 ऑफ देम हैव ऑलरेडी कम। और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है दे आर ऑल्सो इन एक्टिव टॉक्स विद अस। कुछ लोगों से हमारा MOU भी अभी हो चुका है। तो ये सारा इकोसिस्टम हम ऐसा खड़ा करेंगे कि ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है एज ए एकेडेमिया दे विल बी देयर। ये इनोवेशन सिटी जो है, ये इनोवेशन सिटी इसके साथ मैरी करेगी, और उसके साथ कंप्लीट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इस प्रकार के एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस हमारे प्रयास में ये जो रिपोर्ट आपने यहाँ पर हमारे सामने रखी है वो बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की रिपोर्ट है, और उसको ही एक प्रकार से गाइडिंग प्रिंसिपल मानकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं आज आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिन लोगों ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए एक कंट्रीब्यूट किया है, जो काउंसिल इसके लिए बनी थी, उसके सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि इसी प्रकार से नीति के साथ साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करते हुए महाराष्ट्र को इस क्षेत्र में नंबर 1 बनाते हुए भारत को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब हम लोग तैयार करने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मनापासून धन्यवाद सर. I will now request Shri Neeraj Huddar, Resident Fellow Niti Aayog, to deliver the vote of thanks. Thank you very much, Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, all other distinguished dignitaries for your time, presence, and very inspirational words and guidance for us.
I'll keep my vote of thanks very short and just remind everyone present in this room, on the dais and in the room, of just one message. We don't see today's event as a finishing line. We see this as a very, very important starting point, and we request for all your support to make sure that this remains a starting point and you keep us honest on this mission. In fact, the first step towards this finishing line we will be taking right away. We invite all our distinguished guests who have the green badges to join us for the roundtable that is upstairs. And thank you very much for joining us today.